डिफरेंशियल क्या हुआ, रेट लॉ। ओके, ऑफ द may not be related. Okay. With the rate of reaction, हाँ वहीं तक लिखा है। Rate of reaction AA plus BB अब देता हूं मैं इंफॉर्मेशन देता हूं। पहला concentration of A is equal to 0.3 molar. Concentration of B is equal to 0.2 molar. And order with respect to A and B are 1 and 2 respectively. ठीक है, यहां पर हम लोगों से रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है, ठीक है ना। हाँ वो प्रोपोर्शनल है, वही चीज अभी मैं बताने जा रहा हूँ, उसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया rather than answering it over there, ठीक है। वो कांस्टेंट जो होता है उसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, उसके और भी नाम होते हैं, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली चीज होती है, रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए जो है, that is going to be like if I am going to write, then dA dt is going to be equal to some constant k into concentration of A raised to the power 1 and concentration of B raised to the power 2. क्या? हाँ, इसमें ये होता है कि वो चीज जो होती है ना वो k के अंदर में एसिमिलेटेड रहती है, ठीक है। सो द आइडिया ओवर हियर इज, इसी के लिए ये चीज करा रहा हूं, द आइडिया ओवर हियर इज rate of consumption of A, a rate of consumption of A will be equal to K into A raised to the power 1 and B raised to the power 2, ठीक है। अब रेट ऑफ कंजम्पशन रेट ऑफ रिएक्शन के साथ कैसे रिलेटेड है, तो हाफ इंटू रेट ऑफ कंजम्पशन, इसके हिसाब से जो भी ए की वैल्यू होएगी 1/a into minus dA dt is going to be rate of reaction. Is that okay? Yeah, similarly dB dt जो होगा that is going to be 1/b into minus dB dt is going to be the rate of reaction. Is that okay? But a rate of consumption of A is going to be defined as this, और इस वाले केस में the rate of consumption is going to be this constant k into 0.3 into 0.2 का whole square, ठीक है। This term k is referred as
रेट कांस्टेंट, इसके 3-4 नाम होते हैं. We call it by name rate constant or specific rate constant or we call it by name speed constant or specific speed और रेट. ठीक है, ये कुछ इसके कॉमन नेम्स हैं जिनसे हम इसको प्रोनाउंस करते हैं. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. क्या बोल रहे हो? कॉमन कैसे हो सकते हैं, मतलब इतने सारे हैं तो कॉमन कैसे हो सकते हैं? Okay. हाँ, इसको नोट कर लो जल्दी से. क्या? हाँ बिल्कुल, मल्टीप्लाई करके लिख लेना. के की वैल्यू दी रहेगी तो. हाँ नहीं, ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी की वैल्यू, मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 और 2 है. ए और बी की वैल्यू गिवन नहीं, तो डेफिनेटली एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगा. ए और बी अगर 1 और 2 होते तो फिर बोल सकते थे हम कि एलिमेंट्री रिएक्शन है. ओके. और यहाँ पर ऊपर में अगर के की वैल्यू में मान लो, आई एम पुटिंग इट टू बी 10 मोलर माइनस 2 इंटू पर सेकेंड. ठीक है, के की अगर ये वैल्यू लेता हूं तो मेरा रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए क्या हो जाएगा? माइनस डी ए डी टी विल बिकम इक्वल टू 10 multiplied by 0.3 into 0.04, which will be 0.12 molar per second. ठीक है, अब इसमें हमको दो चीजें और समझनी है यहीं पे. ये यहाँ तक नोट कर लो. ये नाम तो पता चल गया आप लोगों को. स्पेसिफिक वर्ड इसलिए यूज करते हैं इसके साथ क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ कंजम्पशन, अगर इनकी वैल्यू यूनिट लेंगे तो इट विल बिकम इक्वल टू के. और यूनिट कंसंट्रेशंस जनरली जब यूनिट चीजें लेते हैं दैट इज रेफर्ड एज स्पेसिफिक. ठीक है,
यही हमारा नोमेनक्लेचर होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बचपन में पढ़ते थे हम। स्पेसिफिक क्यों बोलते थे? एक केजी या यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर से, सॉरी, यूनिट टेम्परेचर राइज करने में या 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने में जो हीट रिक्वायर्ड होता था वो स्पेसिफिक बोलते थे। स्पेसिफिक वर्ड ही इसी के लिए आता है। once you tell specific, that means you are specific unit mass के लिए आप चेंजेस क्रिएट कर रहे हैं या चेंजेस देखना चाहते हैं या पैरामीटर को नोट करें या नोटिस करना चाहते हो। तो द स्पेसिफिक यूनिट कंसंट्रेशन पे जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा उसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं, इसलिए इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। नेवरदलेस, लेट अस मूव ऑन। सर आप एक बार वो पूरा दिखा सकते थे मैंने सर? ओके, अच्छा, अब अगर मैं पूछूं डीए डीटी का यूनिट क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन का यूनिट क्या होना चाहिए? डीए डीटी है डेल्टा ए बाई डेल्टा टी है, तो मोलर। मोलर पर सेकंड रहना चाहिए। ये पहले बताया था क्या? बता दिया था? ओके, ठीक है, चलेगा। तो दिस इज गुड। अब हम लोग ये रेट कांस्टेंट का यूनिट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रेट कांस्टेंट के यूनिट्स में बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं। ठीक है, सो ये नोट हो गया? हाँ सर हो गया। Okay, so I'll move on to the next page. Okay. Oh, इसको जनरली के या फिर लैम्डा से डिनोट किया जाता है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। नाउ समझो मेरा ये है डीए। अच्छा, अभी पिछला वाला क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, उसमें थोड़ी सी चीज, एक चीज और अभी बाकी है। ठीक है, तो वहां पे मैंने रेट ऑफ रिएक्शन पूछा था और यहाँ पर सिर्फ कंजम्पशन रेट ऑफ ए मैंने निकाला है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ROR will be equal to -1/a dA dt। ठीक है, चूंकि ए की वैल्यू पता है नहीं है तो मैं सिंपली इसको लिखूंगा 0.12/a मोलर पर सेकेंड। इज दैट ओके? दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन। इससे मुझे दो चीजें मिलती हैं जिसको मुझे आगे डिस्कस करना है। क्या क्या? हम्म, हाँ, वो के अंदर में, बट रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लिखेंगे
रेट ऑफ रिएक्शन, तो डिवाइड करना पड़ेगा कि डीए dt जो है वो प्रोपोर्शनल है, उसके अंदर मतलब कांस्टेंट के अंदर में ए ऑलरेडी है, तो उसको डिवाइड करेंगे तब रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा ना। ये बात समझ में आ गई हम लोग को ना, या कोई प्रॉब्लम है? सर एक बार रिपीट करो ना। हाँ, मैंने शुरू में बोला कि के जो है, के के अंदर में ए वाला टर्म जो है ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब मुझे अब मुझे ये पता है कि रेट ऑफ कंजम्पशन जो है दैट इज इक्वल टू दिस, इसके बेसिस पर मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली माइनस डी ए डी टी की। अब मेरे से अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा तो माई रेट ऑफ रिएक्शन इज माइनस 1/a dA/dt, वेयर माइनस dA/dt इज दिस नंबर, तो इसको a से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे ना। ठीक है, तो सर बट हमने लाइक पीछे लास्ट रेट कांस्टेंट का बता रहे थे सर, हाँ तब आर ओ आर इज इक्वल टू -1/dA/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंसिडरेशन ऑफ अरे मैं एक्स। बोल रहा हूं अभी भी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, ठीक है। बट जब यहाँ पे कांस्टेंट लाते हैं तो कांस्टेंट जो होगा ना वो इनके बेसिस पर, आरओआर के बेसिस पर डिफाइन नहीं होता है, वो इंडिविजुअल रिएक्टेंट के कंजम्पशन रेट के बेसिस पर डिफाइंड होता है। ये बात समझ में आ रही है? जैसे डीए डीटी का जब हम देख रहे होंगे तो एक रेट कांस्टेंट रहेगा, डीबीडीटी देख रहे होंगे तो कोई दूसरा रेट कांस्टेंट रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है, तो एक ही रेट कांस्टेंट यहां पर रहेगा ऐसा नहीं है। अब वो डिफरेंट रहेगा कि क्यों डिफरेंट रहता है, क्योंकि वो 1/a 1/b उसके अंदर में रहते हैं, या मल्टीप्लायर ऑफ ए या बी रहेगा। अगर आर ओ आर के बेसिस में देखोगे आप तो आपका एक वैल्यू के रहेगा, ठीक है। जब इनके प्रीटेक्स्ट में देखोगे तो आपका के जो होगा दैट विल बी मे बी k1 इज इक्वल टू ए के, k2 विल बी b के रेस्पेक्ट में k2 बनेगा तो वो b के हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहां पर मैंने जो दिया वो रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू ए वाले के लिए दिया, यहां पर जो यूज कर रहा हूं मैं उसके लिए दिया। अगर ये दिया हुआ है डीएडीटी कंजम्पशन रेट ऑफ डीएडीटी वाला रेट कांस्टेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के टाइम में, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के टाइम में मुझे K1 को A से डिवाइड करना पड़ेगा, और वो डिवाइड करूंगा तो मुझे यही नंबर मिलेगा। इसमें क्या कंफ्यूजन है? सर नहीं, सर मुझे लगा कि मतलब आपने सिर्फ बोला था सुनिए कि के अंदर ही उसका कोएफिशिएंट भी आता है, हाँ, तो इसलिए फिर हाँ इसलिए वो फिर बिल्कुल, बट अब रेट ऑफ रिएक्शन जब लिख रहा है तो कोएफिशिएंट जो है उसको हम इंडिपेंडेंट बना रहे हैं ए और बी से। पहले वो हाँ सर। इंक्लूडेड था तो इसलिए उसको डिवाइड कर, ठीक है। अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो है डीएडीटी, समझो मेरा एक्स ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इट इज गोइंग टू बी रिटन एज ए इंटू concentration of a raised to the power x for x order reaction। अब डायमेंशनल एनालिसिस से अगर हम जाएंगे तो
क्या? सॉरी, यहाँ पे मैं सिर्फ ए के लिए कर रहा हूँ. ए इज गोइंग टू प्रोडक्ट, और उससे बी आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता है. यहाँ पे वाई भी अगर आता तो एक्स प्लस वाई हो जाता. हाँ सॉरी सर, you have taught about how to find the order in complex reaction. No, I haven't taught it yet. और वो काफी मुश्किल काम है, थोड़ा सा उसमें से पढ़ना है तुम लोग को. अभी बता रहा हूँ, 4 मेथड्स है. अभी आई एम बिल्डिंग अपॉन इट. अभी सिर्फ ये बताया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली फाइंड होता है, ठीक है. उसके अलावा कुछ नहीं बताया. अब धीरे धीरे बता रहा हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैसे फाइंड करते हैं. सो इसका अच्छा ये बता दूं, ये जो साइन है यहाँ पर यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए? फॉर डायमेंशन, ठीक है. जनरली बिग ब्रैकेट को यूज करते हैं डायमेंशन के लिए, बट बिग ब्रैकेट ऑलरेडी यूज्ड है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो ये साइन फॉर डायमेंशन, ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी एम एस माइनस वन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के into this is m to the power x. So m to the power x, that implies dimension of k is equal to m to the power 1 minus x s minus 1. ये बात समझ में आ रही है? यानी रेट कांस्टेंट का जो डायमेंशन होगा मेरा, उससे मुझे क्या पता चल सकता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. इज दैट ओके? So rate constant, the unit of rate constant, unit of a rate constant is indicative of order of a reaction. ठीक है. अब वो किस चीज के लिए दिया हुआ है? अगर इंडिविजुअल के लिए रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, जैसे ए के रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट क्या है, ठीक है, या बी के रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट क्या है, या ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या है, ठीक है. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? तो इन बेसिस पे हम ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट या ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ओवरऑल कंपोनेंट्स डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है. जैसे अगर किसी का रेट कांस्टेंट के जो है दैट इज इक्वल टू 0.5 m रेज टू द पावर -2 s -1 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? थ्री. This will be a third order reaction. X will be equal to 3. ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, A हो गया, ये B. If K is equal to 1 per second, what will be the order of reaction? क्या होगा? 1. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है. X की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 minus 1 is 0. So it will be a first order reaction. Similarly, if K is equal to 5 m raised to the power 2 by 3 s minus 1, what will be the order of reaction? 1 by 3. कौन सा? 1 minus x is equal to 2 by 3. तो x की वैल्यू क्या होगी? बात समझ में आ रही है सारे लोगों को?
सो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट देख करके वी कैन डिसाइड अपॉन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मुझे कैलकुलेशन समझा, लेकिन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिकेटिव ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहाँ से करो? अरे यहां से m का जो पावर है दैट इज 1 - x। हाँ, तो यहाँ पर जो पावर है उसको 1 - x से आपने इक्वेट कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई एंड दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नहीं सर, बट वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ये कहाँ प्रूव हुआ? ये वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, वो कहाँ प्रूव किया है? अरे किया ना, यहाँ पर एक्स ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा रेट कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आया या यूनिट क्या आया, m raised to the power 1 - x s - 1। इज हाँ दैट सर, ओके? हाँ। आया ना? हाँ सर, आया। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर, अभी समझ। ठीक है, नोट कर लो। a plus b giving us product, maybe c 4 6 8 10 concentration, and then we have time on other axis. इसका concentration 10 से 6 आता है। B का concentration 4 आता है। C का concentration ठीक है, इसके बेसिस पर ए बी सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से ग्राफ किसको किसको कौन सा लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये हम पता कर सकते हैं। ये मतलब ठीक है, इनमें से कोई एक ए को करेगा और कोई एक बी को करेगा, और ये हमेशा सी को करेगा। और अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। ये 4 यूनिट्स डिक्रीज कर रहा है, जितने टाइम में उतने ही टाइम में बी जो है 2 यूनिट्स डिक्रीज कर रहा है, और ये 6 यूनिट्स इंक्रीज कर रहा है। सो ए बी एंड सी आर गोइंग टू बी इन द रेशियो ऑफ 2:1:3। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन जो होता है इस टाइप का, इसके ऊपर बेस्ड,
डिफरेंशियल रेट लॉ, और वो होता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन AA plus BB giving us product with respect to A and B and overall based on following experimental data. अब एक्सपेरिमेंटल डेटा में हम लेते क्या है, ये जो ऊपर रेट लॉ हमने डिफाइन किया ना, ठीक है, उसमें इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इनिशियल कंसेंट्रेशंस के प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। अगर मैं सॉरी पिछले वाले पेज के इक्वेशंस पर जाऊं तो रेट ऑफ द रिएक्शन या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए जो होगा, इनिशियल रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, that is going to be proportional to the initial concentration of A and B, right? Or initial rate of the reaction is going to be proportional to initial concentration of A and B, ठीक है। So इस आइडिया को यूज करके बेसिकली हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकालते हैं। We take different concentrations, so क्या क्या नहीं, कैसे सेम होगा? they are going to be equal once you divide that rate or that slope by their stoichiometric coefficients. That should be same now, not the rate of consumption of A or rate of consumption of B or rate of formation of C, ठीक है। इसको बोलते हैं इनिशियल rate of reaction, initial rate of reaction, initial concentration A naught, initial concentration B naught. First data could be 5 into 10 to the power minus 3. A is equal to 0.2 molar. B is equal to maybe 0.4 molar. दूसरा data, this might be 10 to the power minus 2 or 10 to the power 3 minus 3. This is 0.2 molar and this is 0.08 molar. तीसरा information, this is when this becomes 0.4 molar, this remains 0.4.
एंड आखिरी में ऑल्सो फाइंड a rate constant. ठीक है। अच्छा, ये रेट कांस्टेंट जो बोला जा रहा है कौन सा बोला जा रहा होगा? इट इज नॉट विथ रेस्पेक्ट टू ए, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू बी, इट इज द ओवरऑल रेट कांस्टेंट। ठीक है, कॉमन वाला जो। हाँ, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, जब इनिशियल जो भी हम कंसेंट्रेशन लेंगे, कंसेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। तो इनिशियली जो आप कंसेंट्रेशन होंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू रहेगा उसको इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। ऑल टाइम रेट ऑफ रिएक्शन जरूरी नहीं है सेम रहेगा, क्या आपका कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करते रहेगा। इज दैट ओके? हाँ, सिर्फ एक केस में वो कांस्टेंट रहता है, वो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि उसमें कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर जीरो रहेगा। तो the rate of the reaction is not going to change with concentration, that will be independent. Is that okay? So अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? So we know that ROR is equal to constant K, A raised to the power X and B raised to the power Y. ठीक है, I may call it A. अब इसमें मैं डिफरेंट वैल्यूज डाल करके I'll have first thing 5 into 10 to the power minus 3 is equal to K into 0.2 raised to the power X and 0.4 raised to the power Y. Then 10 to the power minus 3 is equal to K into 0.2 raised to the power X into 0.808 raised to the power Y. और तीसरा हो जाएगा 2 into 10 to the power minus 2 is equal to K into 0.4 raised to the power X and 0.4 raised to the power Y. अब this is A1, 0.08 लिखा है ना, क्या हुआ? कहाँ सेम हो गया? हाँ, ये दोनों 0.4 0.4 है, तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, this is my A1 equation, A2 equation and A3 equation. I can divide A1 with A2. ठीक है, A1 by A2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? On LHS we are going to have 5 and RHS में KK cancel, X वाला term cancel, it will become 0.4 by 0.08 by power of Y. So this will be equal to 5. ठीक है, that implies 5 is equal to 5 raised to the power Y. This will make Y is equal to 1. 8 5 40, 2 डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर 40 हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा। ठीक है, so Y is equal to 1. इक्वेशन 2m3 को अगर मैं डिवाइड करूं, या सॉरी am3 को अगर मैं डिवाइड करता हूं a1 एंड a3 को, तो आई एम गोइंग टू गेट 5 into 10 to the power minus 3 divided by 2 into 10 to the power minus 2 is equal to 0.2 by 0.4 raised to the power x
ठीक है, दिस विल बी 1/2, इसको इनवर्स कर लेंगे तो 2 into 10⁻, या फिर रहने दो, ऐसे भी रहने दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो नीचे में एक 10 आ जाएगा और ये 5/20 हो जाएगा, दैट इज 1/4 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर x, that implies x is equal to 1/2 raised to the power 2 is equal to 1/2 raised to the power x, and that implies x is equal to 2. ठीक है, so it is of first order with respect to a, and second order with respect to a, and first order with respect to b. ठीक है, order with respect to a is equal to 2, order with respect to b is equal to 1, overall order 3। ठीक है, रेट कांस्टेंट क्या होगा, अब दोनों की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर लेंगे और उससे k की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मैं थर्ड इक्वेशन चूज करता हूँ, 2 into 10⁻⁻2 is equal to k into 0.4 raised to the power 2 into 0.4 power 1, that implies k is equal to 2 into 10 to the power -2 divided by 4 is 16 into 4, 64. 64 into 10 to the power -3, that will be equal to 10 or 20 by 64, which is equal to 5/8। यूनिट क्या होगा k का, रेट कांस्टेंट है, ध्यान से देखिए, अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलिए और फिर आंसर दीजिए। हाँ, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, हाँ क्या, m का पावर क्या लिखूं मैं, हाँ x क्या है, वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, क्यों 1 क्यों नहीं रहेगा, 3 रहेगा। Therefore m -2 raised and s raised to -1, m raised to -2 s raised to -1। ठीक है, MCQ में यही क्वेश्चन हूबहू ये वैल्यू और ये यूनिट चेंज करके दिया जा सकता है। ठीक है, सब में अलग अलग से सब नंबर तो सेम ही था, ठीक है ना, या 2 नंबर तो सेम ही था। सो 5/16 आएगा क्या, हाँ 5/16 आएगा, सॉरी माय नंबर वाज रॉन्ग, 5/16। ठीक है, अच्छा, दिस इज द फर्स्ट मेथड। एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ही नहीं नोट किए हो, क्वेश्चन से या आंसर से, आप लोगों ने क्वेश्चन नोट किया था, देता हूं, या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म में चीजें हैं। ठीक है, अब डिफरेंशियल फॉर्म में ना रख के उसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ अंडर प्रॉपर लिमिट्स एंड रीअरेंजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे जो हमको टाइम के रेस्पेक्ट में कंसेंट्रेशन का रिलेशनशिप मिलता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, अभी क्या था, रेट ऑफ इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन
एंड कंसेंट्रेशन के बीच में रिलेशन था, उसको हम कंसेंट्रेशन एंड टाइम के बीच का एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। सो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है? इंटीग्रेटेड रेट equation. The relationship of variation of concentration of reactants or product with respect to time is known as integrated rate equation. I could take a very simple one. The zero order reaction क्या होगा? अगर A is going to product and we know that it is a zero order reaction, zero order, तो हमारा expressions कैसा आएगा? Minus dA dt will be equal to K A raised to the power 0. Is that okay? That will mean minus dA is equal to KT KDT. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे अंडर अप्रोप्रिएट लिमिट्स। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है या कंसेंट्रेशन ऑफ A, assume it to be A0, ठीक है, and at time t it can be written as AT. So this will transform to be minus of AT minus A naught is equal to KT, or AT is equal to A naught minus KT, ठीक है। ये मेरा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गया जीरो ऑर्डर के लिए। अब यहाँ पर एक दो चीजें और देख लेते हैं हम लोग। ये अब हाफ लाइफ का डेफिनेशन भी बताऊंगा और फिर 3 ग्राफ्स इसके बताऊंगा, ठीक है। सो आई जस्ट हाफ लाइफ का डेफिनेशन जो होता है वो ये होता है, हाफ लाइफ, इसको जनरली टी हाफ और कैपिटल टी हाफ और T50% बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो गया? द टाइम आफ्टर विच द कंसेंट्रेशन ऑफ a reactant becomes half of its original concentration, ठीक है।
the time period after which concentration of a reactant becomes half of its original value. So zero order reaction के लिए, ठीक है, what will be the half life? So we can calculate it for zero order reaction. For zero order reaction, T half can be calculated as A naught by 2 should be equal to A naught minus KT. That implies T is equal to A naught minus A naught by 2 whole divided by K, which is equal to A naught by 2K. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। एंड इसी टाइम को हम लोग टी हाफ बोल सकते हैं। दस टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2K। क्या हो गया? ओके, अब इन सारे इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग 3 ग्राफ्स हमारे पास आते हैं फॉर जीरो। यहां तक नोट कर लिया? ओके, आप लोगों ने अथर्वन हर्षित? हाँ सर, हो जाना सर। मैंने उधर से नोट नहीं किया है, लाइक पीछे वाले शीट से। ये वाला किया है? हाँ सर, ये सब किया है, क्वेश्चन वाला किया है सर। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अच्छा, हाँ वो नहीं किया। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक फटाक से, या फिर पीडीएफ भेजूंगा तो कर लेना। ये हाफ लाइफ कर लिया? हाँ सर। हाँ, लिया ही नहीं था ना? लिया कहाँ था? ऑर्गेनिक वाला नहीं लिया, तो वो लास्ट वाला ही जो है वो। सो यहाँ पर हमारे पास 3 ग्राफ्स इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट ऑफ द रिएक्शन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, क्या क्या प्लॉट करूंगा? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट, तो क्या आएगा? इट इज गोइंग टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए द ग्राफ इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट, सो इट इज गोइंग टू बी अ फिक्स्ड लाइन। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? द सेकेंड ग्राफ इज गोइंग टू बी in between concentration and time and concentration.
ठीक है, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कैसे वेरी करेगा? इट इज वेरिंग लाइक दिस, यही वाला एक्सप्रेशन है. इज दैट ओके? It will be a straight line with slope minus k, straight line with slope minus k, and x intercept, y intercept as a naught. That means it is going to look something like this. And possibly this is one of the reactions which is going to get completed. ठीक है, नेगेटिव ऑर्डर और जीरो, अप टू जीरो ऑर्डर तक जो रहते हैं वो कंप्लीट हो पाते हैं. बाकी सारे रिएक्शंस जो होंगे हायर ऑर्डर्स के, दे आर नॉट गोइंग टू गेट कंप्लीटेड. ठीक है ना? Tan theta is equal to minus k. ओके, टी हाफ लाइफ को अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन के अलोंग इसके प्लॉट करता हूं, टी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर डिफरेंट इनिशियल concentrations, they are going to be directly proportional. The graph is going to look like something like this. Right? और इसका स्लोप क्या होएगा? Maybe phi, and tan phi is equal to 1 by 2k. This is characteristic graphs of zero order reaction. ठीक है, तो तीन मेथड्स जो हमारे थे वो अल्जेब्रिक मेथड्स थे, जो हमने जैसे जीरो ऑर्डर एस्टैब्लिश करना है तो मुझे क्या एस्टैब्लिश करना होगा? टी हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन. अगर ये अल्जेब्रिकली मैं ये कर पाता हूँ, रिलेट कर पाता हूँ, देन आई कैन से दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, जैसे 8 मोलर लिया किसी चीज का कंसंट्रेशन इनिशियली और 4 मोलर आने में उसको लगता है 50 मिनट. ठीक है, तो अगर 4 मोलर लूंगा तो उसको 2 मोलर आने में कितना टाइम लगेगा? 25 मिनट्स. हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन किया तो हाफ लाइफ भी मेरा हाफ हो जाएगा. दे आर गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. I mean, as they are directly proportional. Is that okay? Yes. Let us go to first. ये note हो गया ना? Let us go to first order reaction. Thanks. First order reaction. इसमें again AA is going to product
minus dA dt will be equal to K into concentration of A. That implies dA by concentration of A is equal to minus K dt. It can be integrated in the limits of again A naught and AT du concentration of A minus K dt in the limits of 0 and t. This is going to give me ln क्या हुआ? This will be 80 by A naught is equal to minus KT further ये ठीक है. इसका एक मतलब ये हो गया, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ 80 by A naught e to the power minus KT. That implies 80 is equal to A naught e to the power minus KT. ठीक है. हाफ लाइफ क्या हो जाएगा? हाफ लाइफ is equal to or T half after lapse of one half life we will have 80 will be equal to A naught by 2, and therefore ln A naught by 2 divided by A naught is equal to minus KT half life. That implies ln 1 by 2 is equal to minus KT half life. That implies T half life will be equal to ln 1 by 2 को मैं minus ln 2 लिख सकता हूँ and ये minus k हो जाएगा, so it will be ln 2 by k. ln 2 की वैल्यू होती है 0.693 divided by k.
क्या हुआ? So T half life will be equal to 0.693 by K. Now यहाँ पर हम लोग को ये पता चला कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जो है मेरे, उनका हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन reaction half life is independent of initial concentration. So it doesn't matter what initial concentration you are taking. Zero order वाले के लिए क्या था? अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को मैंने कम किया, हाफ किया या 3 टाइम्स कम किया, तो मेरा हाफ लाइफ 3 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है। और अब यहाँ पर क्या है, मैं कंसंट्रेशन को जो भी करना है करूँ, मेरा हाफ लाइफ जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर कोई भी रिएक्शन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा हूँ और उसका हाफ लाइफ अगर मेरा कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, मतलब कुछ भी कंसंट्रेशन लो, आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम उसका कंसंट्रेशन हाफ हो जा रहा है रिएक्टेंट का, तो आई कैन से दैट it is typically following the first order dynamics. Otherwise this would not have been possible. किसी भी और ऑर्डर में ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। It can only be possible in first order. ठीक है, जो भी डेरिवेशन कर रहे हैं ये इस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए यूनिक सॉल्यूशन, इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो सकता है, या किसी और का ये रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, किसी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ये इक्वेशन नहीं आ सकता है। ठीक है, ये यूनिकली फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब कमिंग टू ग्राफिकल थिंग्स, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा? विथ रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन हाउ इज इट गोइंग टू वेरी? कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो रेट कैसे चेंज करेगा? डायरेक्टली चेंज करेगा, राइट ना? कंसंट्रेशन ऑफ ए को अगर मैं इंक्रीज करता हूं, दिस इज गोइंग टू बिहेव समथिंग लाइक दिस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, सेकेंड थिंग इज concentration with respect to time कैसे जाएगा? Concentration and time graph, it will be a exponential decaying graph. Clear from this? A naught, the graph is going to look like ठीक है, ये भी नहीं, अभी हो गया लगभग, नॉट परफेक्ट बट लगभग ठीक है। अपॉन नहीं, वो इंफिनिटी पर ज्वाइन करें क्या? एसिम्पटोट, हाँ, क्या हुआ?
ओके क्या नहीं तब परेशान नहीं हुआ था, परेशान हो ठीक है। ये है टी हाफ लाइफ, सॉरी initial concentration and T half life. So no matter what initial concentration we are going to take, the half life is going to be same, and if it is same, we are going to call it a first order reaction. Let us analyze second order reaction. Okay, for second order reaction, this is going to look like minus dA dt will be equal to K into concentration of A का square, or it will become minus dA dt minus dA by A square K dt. Now after doing this, I can integrate in between A naught to AT 0 to T that implies one by AT minus one by A naught. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वन बाई ए हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस साइन पहले से है तो इंटीग्रेट करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, and it will simply become 1 by a. 1 by a का डिफरेंशियल इज minus 1 by a स्क्वायर, ठीक है। और इधर हमारा हो जाएगा kt, that implies 1 by at is equal to 1 by a naught
1 by A naught plus KT upon close analysis, we can be further sure that this reaction is also not going to get completed ever. पिछला वाला रिएक्शन कब कंप्लीट होगा? इंफिनिटी टाइम पर. ये वाला कब कंप्लीट होगा? ये भी इंफिनिटी टाइम पर ही कंप्लीट होएगा. इंफिनिटी के पहले कंप्लीट नहीं होएगा. और सारे हायर ऑर्डर रिएक्शंस they all are going to get completed only at infinity. एक्सपोनेंशियल है ना. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना. AT की वैल्यू 0 तभी होएगी जब वो इंफिनिटी होएगा. हाँ सर हो गया. है ना. टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर ही AT की वैल्यू 0 होगी ना. अदरवाइज कहाँ होगी? ओके. हाफ लाइफ after lapse of 1 t half, we will have AT equal to A naught by 2. Therefore, 1 by A naught by 2 is equal to 1 by A naught plus KT. That implies 2 by A naught minus 1 by A naught is equal to KT, or 1 by A naught is equal to KT, or T is equal to that implies T is equal to 1 by K into A naught. This is nothing but T half. Okay. Now the graphs are going to be a rate of the reaction and concentration of A and rate. Concentration and rate का ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा? It will be a parabolic graph. ठीक है. ये स्क्वायर के साथ वेरिएशन है ना. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज K इंटू A स्क्वायर. अरे dA dt जो है क्या है यहाँ पर? ठीक है. रेट का मतलब क्या है? माइनस dA dt. सो दिस विल लुक लाइक दिस. अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसके साथ अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, पैराबोलिक आ रहा है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये क्यूब के साथ भी वेरी कर रहा होगा तो भी ग्राफ लगभग ऐसा ही दिखेगा, डिफरेंट नहीं दिखेगा.
पावर 4 के साथ भी वेरी कर रहा होगा तो ऐसा ही दिखेगा, पावर 6 के साथ भी वेरी करेगा तो ऐसा ही दिखेगा। तो कंफर्म कैसे करेंगे? अब यहाँ पर हिट एंड ट्रायल चालू होता है, ठीक है। पहले ए के रेस्पेक्ट में रेट को प्लॉट करते हैं, फिर ए स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर ए क्यूब के, फिर ए 4 के, 3 ए 4 ए 5 सबके साथ करते हैं। जिसके साथ स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ वो ऑर्डर हो जाए। बात समझ में आ रही है? हाँ, सबका करेंगे प्लॉट। हाँ, ऐसे थोड़ी एक्सपेरिमेंट्स लंबे क्यों होते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है। हाँ, अरे यहां पर देखो, ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन ए टू द पावर एक्स के रेस्पेक्ट में जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। बाकी सारे केसेस में इट विल बी पैराबोलिक, ठीक है ना। सो बस वही बोल रहा हूँ कि जिस जिस पावर पे, मतलब यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ए रखते हैं और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आते हैं, मतलब इट इज फर्स्ट ऑर्डर। ए स्क्वायर के साथ फर्स्ट स्ट्रेट लाइन आया तो इट इज गोइंग टू बी सेकेंड ऑर्डर। ए क्यूब के साथ स्ट्रेट लाइन आया तो थर्ड ऑर्डर। ए टू द पावर 4 के साथ स्ट्रेट लाइन आया तो फोर्थ ऑर्डर, एंड सो ऑन सो। सो कंफर्मेटरी टेस्ट इसका क्या होएगा? दिस ग्राफ। A का स्क्वायर and rate is going to give us a straight line, ठीक है, and this will confirm the second order reaction. Next one is क्या? हाँ, सेकेंड में आ गया तो सेकेंड ऑर्डर हो गया। हाँ, तो ये वाला तो सेकेंड ऑर्डर का ही ले रहा था मैं ना, वो तो मैं जनरल के लिए बता रहा था। अबे क्या कर रहे थे? नहीं विनीत, हाँ उसको कंसेंट्रेशन ऑफ ए के साथ अगेन यही चीज होता है। कंसेंट्रेशन ऑफ ए को अगर मैं प्लॉट करता हूं टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेरिएशन इज गोइंग टू बी समथिंग ऑब्लिक, बट 1/a का वेरिएशन अगर टाइम के रेस्पेक्ट में मैं प्लॉट करता हूं तो इट इज गोइंग टू गिव मी अ स्ट्रेट लाइन। इज दैट ओके? हाँ सर। Time and 1 by concentration of A. This is going to give me a straight line. और ये लाइन कैसा होगा? ये कुछ इस तरह का लाइन दिखेगा। Where this value is 1 by A naught. अरे एक सेकेंड रुको, हाँ ठीक। Is this okay? हाफ लाइफ कैसा दिखेगा? If I'm going to plot half life with respect to initial concentration, it's going to look something like this. It will be a hyperbolic curve. T half life with initial concentration. This is going to be a hyperbolic curve. Why? Because product of these two things is a constant. ठीक है? So this will be the nature of half life and
time, sorry, concentration variation. Xth order reaction. So if I'm now going to consider the Xth order reaction, that is general Xth order reaction. क्या नहीं हो पाता ना, फर्स्ट ऑर्डर वाला डिफरेंट रहता है, हायर वाले लोअर वाले एक अलग हिसाब किताब में रहेंगे. जीरो एक्स, अच्छा एक्स की वैल्यू जीरो रखते तो ठीक है, बट एक्स की वैल्यू वन जब रखते हैं ना तो इट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रक्टिव ना, तो उसको एनीवे अलग से एनालाइज करना. So A is giving me the product and minus dA dt will be equal to K into concentration of A raised to the power X, which I can write as minus dA A raised to the power X is equal to K dt. Integrating them in proper limits, proper limits are at time t is equal to 0, the concentration would be A naught, and at time t is equal to t, the concentration is going to be AT. Integral 0 to t, and this is going to give me इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, x raised to the power minus x है, सॉरी a raised to the power minus x, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1, हाँ क्या, माइनस a to the power 1 minus x, a to the power 1 minus x upon 1 minus x in the limits a naught to AT, and this will be KT. This will transform into A naught raised to the power 1 minus 6 by minus AT raised to the power 1 minus x divided by 1 minus x is equal to KT. Are we getting this? Or AT raised to the power 1 minus 6 is equal to A naught raised to the power 1 minus 6 minus 1 minus 6 KT. ठीक है, ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन हो गया. टी हाफ लाइफ कैसे बनेगा हमारा, आफ्टर लैप्स ऑफ 1 half life, what we will have, after lapse of 1 half life,
AT will be equal to A naught by 2. Therefore, concentration of A naught by 2 raised to the power 1 minus x is equal to A naught raised to the power 1 minus x minus 1 minus x kt. This means T half life is equal to, इसको लेफ्ट तरफ लेकर के आया मैं, 1 माइनस एक्स इंटू के रहेगा, वो पूरा डिवीजन में आएगा, दिस माइनस दिस, सो इट विल बी ए नॉट 1 माइनस एक्स माइनस ए नॉट 1 माइनस एक्स बाई 2 टू द पावर 1 माइनस एक्स. ये बात समझ में आ रही है? And this whole thing multiplied by 1 minus x into k. ठीक है? T half life is equal to 1 by 1 minus x into k. तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग a नॉट 1 minus x, तो यहाँ पे बचेगा 2 to the power 1 minus x minus 1 divided by 2 to the power 1 minus x. ठीक है? अब जनरली x अगर बड़ा होगा तो हमको ये दिखेगा कि ये इवेंचुअली 1 by 1 minus 1 by 2 to the power 1 minus x होगा. x अगर 1 से बड़ा हो तो ये नंबर निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव होगा तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा 1 से, सो ये टर्म निगेटिव हो जाएगा, बट साइमल्टेनियसली ये टर्म भी निगेटिव हो जाएगा. ठीक है? तो दोनों निगेटिव कैंसिल होकर के पॉजिटिव. T half life generally is going to be given like this. अब एक छोटा सा क्वेश्चन इन सब के बेसिस पर, राइट? ये नोट कर लिया आप लोगों ने ना? क्वेश्चन, find the order of reaction with respect to A for following data. इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं वेरी कर रहा हूँ and accordingly T half life वेरी हो रहा है. तो फर्स्ट केस जो लिया उसमें एक कंसंट्रेशन लिया 4 मोलर and T half life happens to be मान लो 8 आवर्स है. दूसरी बार में मैंने इसको 2 मोलर किया,
it became easy. Yeah, it is 1 hour. ठीक है, अभी थर्ड रहेगा, एक तो ऑर्डर निकालना है, और अगर मैं कंसेंट्रेशन 8 मोलर लूंगा, ठीक है, तो मेरा हाफ लाइफ क्या होगा ये फाइंड करना है। दो चीजें फाइंड करनी है हम लोगों को, पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना और दूसरा half life find करना है when 8 molar is the concentration. Steps are pretty simple. हाँ कर सकते हो सॉल्व। Assuming that it is a X order reaction, I can write something like this. Let this be of X order reaction. देखिए यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, के जो है अगर रिएक्शन फिक्स हो गया तो के की वैल्यू चेंज नहीं करेगी, अगर कुछ चीजें चेंज नहीं कर रहे हैं तो कोई और चीज चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं करेगी, एक्स की वैल्यू भी फिक्स हो गई। अगर एक्स ऑर्डर है, ये रिएक्शन ऐसे तो नहीं है कि एक्स ऑर्डर अभी है 5th ऑर्डर और थोड़ी देर बाद 6th ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। दैट ऑर्डर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, सो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म is going to be same for the entire set of reaction, उसका concentration चाहे कुछ भी ले, ठीक है। that means वो देख लेते हैं, T half is directly proportional to concentration of A naught raised to the power 1 minus x, or I can write it as T half is equal to some constant C into A raised to the power A naught raised to the power 1 minus x. अब इस एक्सप्रेशन को यूज करके एंड डेटा जो दिया हुआ है, T half life of first scenario by T half life of second scenario will be equal to C into initial concentration, which is first में क्या है 4m और second में क्या है 2m, तो 4 raised to the power 1 minus 6 divided by C into 2 raised to the power 1 minus 6, that implies ये क्या है 8 hour and this is 1 hour, यही है ना। So 8 by 1 is equal to
2 raised to the power 1 minus x, which means 3 is equal to 1 minus x, or x is equal to -2. Is this okay? अब फिर से यहां पर अगर मैं आता हूं तो c की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं मैं. It will become 8. या तो c की वैल्यू फाइंड कर लो या फिर दोनों का रेशियो निकाल के रख दो. इट्स द सेम थिंग. ठीक है, जैसे यहां पर मेरा क्या हुआ, कंसेंट्रेशन 8 मोलर हो गया, तो मैं अब t half 1 by t half 3 will be equal to c into 4 raised to the power 1 minus -2 divided by c raised to c into 8 raised to 1 minus -2. CC cancel, यहाँ पर that implies 8 by t half third is equal to 1 by 2 raised to the power 3. 1 minus -2 is 3. That implies t half in third scenario is nothing but 8 into 8, that is equal to 64. Is that okay? क्लियर है यहां तक की बात? कोई डाउट? ओके